चलो, so last class तक we studied about the bulk modulus of elasticity तक पढ़ा, bulk modulus of elasticity. Okay, now it's a small one more elasticity is there, one is shear modulus of elasticity, last topic, right? Shear modulus. So before that आपको एक छोटा सा concept is there, relation between density, pressure and bulk modulus. Relation between density, pressure and bulk modulus. Suppose मान लो आपका एक बड़ा सा वॉल्यूम इज देयर, पानी में डिप किया, डिप करने से क्या होगा, द फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, उसके वजह से द वॉल्यूम गेट डिक्रीज्ड. सो दिस इज चेंज इन वॉल्यूम. देन व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी व्हेन द वॉल्यूम डिक्रीजेस? मास इज सेम दोनों में, दोनों इनिशियल एंड फाइनल में मास इज सेम. डेंसिटी डिक्रीज मतलब क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीजेस. सो we have to understand that one. When you compress, the density is increasing. When you compress, density increases. So we have a formula to learn. Rho dash is equal to rho into 1 plus delta p by k. Likho. K is the bulk modulus. So what is Delta rho p is, dash? rho dash is the new density. So after decreasing the volume, the density changes, right? Density is how much means rho dash is equal to rho into is a new density. New density. This is the original density. Density. Delta P is pressure or change in pressure? Change in pressure. Delta P is change in pressure by bulk modulus. This is a formula we have to learn. So as we compress, the density is increasing. Then, okay, chalo. Now we have to learn about modulus of rigidity. That is shear modulus, right? Shear modulus of rigidity बोलते हैं. Shear modulus of rigidity we represent as eta. Eta से represent करेगा. So आपको फॉर्मूला मालूम है, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय टेंजेंशियल स्ट्रेन, और shear stress by shear strain को we called as shear modulus of elasticity. देखो already we learned, when you apply tangential force, it got displaced x distance and angle theta, and L is the original length of this one. So what is the formula? Shear stress by shear strain. Shear stress formula क्या है? Force upon area. And shear strain का formula x by L. Okay, when I substitute, what will happen? Eta will be equal to F by A by X by L. Okay, so when you multiply FL by, This symbol is also the same as viscosity symbol, no? yes, eta, FL by AX, FL by AX, this one you have to understand. Eta, rigidity, FL by AX. Or sometimes A by X by L ko we call as tan eta or theta. Some books may they'll give like this, F by A theta. If theta is small, tan theta ko replace as theta. So this is the shear modulus of rigidity. So, Mans, can you go back? Rho dash So, equal to over rho in. here, what is delta P? Delta P is a change in pressure when original pressure and final pressure में change in pressure will be the delta P लगाने का. Okay, delta P by K. K is the bulk modulus of Ls. Done. 1 second. Just like, Yeah, sir, you can go to the shear modulus. Yes. So F by A by X by L or FL by AX. So X is a displacement of the upper face. कितना displace हुआ है initial से, कितना displace हुआ, that is called X.
Done? Yeah. Yes. So shear modulus का फॉर्मूला क्या है? FL by AX. F by A by X by L. Okay. चलो. No, the question करो. So the given three rectangular boxes are there, मतलब cuboids are there. इसमें 5, 10, 8 सेम उसी को उल्टा किया, like 10, 5, 8 and 8, 5, 10. क्या किया? In this case, the shared region is rigidly fixed. A fixed है, bottom में fixed है, and definite force F is applied tangentially. I applied F is applied tangentially. Equal force I'm applying. Apply tangential to the opposite faces to deform the block. The displacement of the upper face will be. The X value is asking किसका ज्यादा है? फर्स्ट वन ना, सेकंड वन ना, थर्ड वन ना, किसका ज्यादा है? और सेम है. So X फाइंड करो by using the formula. And area कौन सा यूज करने का? Wherever you applying tangential force, that area only we should take. Rectangular area, right? हाँ करो. Sir, can't we just say that, sir, won't it be R? Why? Sir, because if you replace X, like N is equals to, I mean, eta is equals to FL by AX. So X will be equal to FL by A neta. So X is directly proportional to L. So whichever has the largest L will have largest. अरे area is same हाँ. X is proportional to F by X is proportional to F by A. Area also we should check. So calculate करो F by A. L by A करो. So it will be R only, no? X is no wrong. L by A. So calculate L by A in case में L in this में 5 by area you can calculate. In this F 10 by area, so 8 by area. Check करो which one will be the more displacement. Oh. So मेरे force is same. Okay, and rigidity of modulus Will of it be that. P? Huh? Will be P. P हाँ? Yeah. ऑल बोलेगा, एक बार आर बोलेगा, पी बोलेगा, कंफर्म करके बोलो. On the video. Will L is same for all? हाँ? Will L be same for all? L बोलते क्या है? फ्रॉम ग्राउंड फिक्स्ड से किधर क्या ये टॉप पोजीशन तक इज L. ग्राउंड Yeah. से ये ग्राउंड है 10 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है. L is different. Oh. So X is proportional to L by So A. then will be maximum in Q. Q is answer. 10 by 40. So won't be 10 by 80. इस किसमें फर्स्ट वन में 10 by 80 5 by 80. So no, sir, for Q. तो मैं so Q is So for answer. Q, won't it be 10 by 80? Q by 10 by 80 है भाई. Area is how much? Area wherever you are applying a force, that force you have to take. Oh, right. That area we should take. That area we should take. Okay. Chalo. So Q is answer. Okay. Potential energy stored in a stretch pair. Very important. On the video. Potential energy stored in a stretch pair. Suppose एक wire है. Wire को मैं खींचा. If I elongated, okay, I done some work. Where is that work went away? It is stored as potential energy. That potential energy formula we have to know. Write down. Potential energy is equal to half into stress into strain into volume. Half into stress into strain into volume is the formula for potential energy. Okay. And question में क्या है? You use the Young's modulus. Y is nothing but stress by strain. मतलब longitudinal stress by longitudinal strain, right? So suppose I want in terms of strain, what you will do? Suppose I want in terms of strain. So from this strain is equal to stress by Y, right? Strain is equal to stress by Y. Use the formula. Half into stress के जगह में क्या डालो? Strain by Y. Strain into strain, strain square, right? Strain square by Y into volume. Suppose exam में they give strain and Young's modulus. He will tell to find potential energy. Use this formula by using this definition. Or other forms में देखो half into
स्ट्रेन को कन्वर्ट करो स्ट्रेस में, यू नो स्ट्रेस को कन्वर्ट करो, स्ट्रेस इज इक्वल टू, इधर हम लोग क्या किया, स्ट्रेस के जगह में स्ट्रेन टू वायरेट, ओके ये रॉन्ग किया ना, ये रॉन्ग किया ना। सो देखो स्ट्रेस के जगह में convert y into strain, right? Stress is equal to y into strain, strain into strain, strain square. So y into strain square, strain square. Okay. Similarly, I want in terms of stress में, तो क्या करेंगे, strain is equal to stress by y, right? Convert करो. So stress into ये right है, stress square So what is by y? y. Young's modulus, Young's modulus of elasticity. समझ रहे? One more formula. Oh, see, this is a basic formula. इधर से we are converting by using this definition. ओके वन फॉर्मूला ऊपर वाला लर्न करो हो जाएगा, वन लर्न करो एंड जिस वन डेफिनेशन आपको लर्न करो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके एंड समटाइम्स ऐसा भी पूछेगा, देखो हाफ इनटू स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया इनटू स्ट्रेन इज नथिंग बट डेल्टा एल बाय एल इनटू वॉल्यूम। टोटल में एक वायर है ऑफ एरिया ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसका लेंथ है एल। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, व्हाट ऑफ द रॉड इज ए इनटू एल। A into L. So LL cancel, A cancel. So potential energy is half into, sometimes force के जगह में they'll tell load. Load is nothing but weight, weight is nothing but force, right? Into delta L, delta L elongation बोलते हैं, elongation बोलते हैं. So use this formula or this formula, very important. Half into stress into strain into volume or half into load into extension is a formula we have to learn. Got it? चलो इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, करो इजी से, थोड़ा जेई में क्वेश्चंस भी करेंगे। A wire suspended vertically from its ends is stretched attaching the weight, weight is given, but the force is given, it is delta L also given, elastic potential energy so much. Force is given, elongation is given, potential energy. So formula is karo half into So I got 1. 1. Wrong. So so does weight mean force? हाँ weight is nothing but force. Weight का units क्या है? Newton So all right? half into 200 into 1 by 1000. So 0.1. हाँ 1 by 0. oh yeah 0.1. Energy is 0.1 joules. Half into 200 into 1 millimeter is 10 power minus 3. Multiply किया तो we'll get 0.1. क्या करो कितना आएगा? When a block of mass is suspended from a long wire of length L, the length of the wire becomes L plus L. वायर को सपोज एक रॉड है, इसको मैं एक मास हेमिस हंग ऐसा किया, उसके वजह से क्या होगा, Half mgl, right? Option D. उसके वजह No, से no. लेंथ Yeah, option D, option D, option एल D. प्लस एल, देखेंगे वो भी करने दो, एलोंगेट हो गया इतना। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सटेंड वायर, So it should be option D. प्रणव बोलो। सो इसमें दोनों ऑप्शन सेम आया ना, हाँ So half mgl. हाफ एमजीएल इज आंसर। तो मैं हाफ इनटू लोड कितना है, लोड इज नथिंग बट फोर्स, राइट? फोर्स इज हाउ मच, mg into change in length, change in length will be how much, L plus L minus L, right? So half mg. करो aluminum rod of Young's modulus undergoes elastic strain, the given elastic strain is given, the energy per unit volume stored in a rod is, energy per unit volume चाहिए, हाँ करो बनाओ। एनर्जी पर मतलब वॉल्यूम को इधर फेंक दो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं उसको। So energy per unit volume means U by V they're asking. हाँ u by v is how much, I represent a small u actually, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल u से रिप्रेजेंट करें। Half into
Sir, strain square means I have to convert it into normal, right? So I get 0.04 by 100. Yes. Okay. Will give options, striker. So G can you give means options? Sir, 5,600. don't guess wrong. No, I didn't guess, sir. I solved. Once again, 1000. So 10 power 4. But what? Once again, so what should it be? 56,000. 56,000, 5,600. So you get 0.056 into 10 power 6. Sir, I got 2,800. No, wrong. Wait, no, by 2. Oh, shit. Sir, you get 5.6 into 10 power 4 instead of 10 power 3. But So, yeah, 1,500. please answer 5600. So Okay. wait, let me see. So half into strain is given, right? Strain Oh square yeah, means yeah. 5.0, yeah, 5.6 into 10 power 3 formula, only. that formula, half into strain into y, strain square into y Yeah. that use, right? Yes. Next. A percentage बोलते क्या है? 500. strain का percentage is equal to 0.04. So it is by 100 लगा है. Strain is equal to 0. by 100. Okay. So next. I'll give options. You try. So S is stress, S- Young's S modulus, square- energy per unit S volume. S square square by 2y. S square by 2y. S square by 2. Yes, correct. Next. So, I got 2:1. Sir, 1 second. Yeah, let them. Sir, I'm not getting, sir, but I'll give it this. Sir, I say root 2:1. I कैसे give क्या a रूट guess. नहीं रूट टू इस्ट वन कैसा है? Sir, I gave a guess. Wrong. Answer is root 2:1. But कैलकुलेट करो कैसे? So do I have to Two- like use that F? You have to use the half into FA into delta L. मतलब So in terms because of I Young's use, modulus में, see they given the ratio of the can you solve energy this question? stored. Diameters I want the ratio of diameter. Sir, can you solve this Because question? So, I got 2:1. So can you the solve the 2:1 question? wrong. 2:1 wrong. So first formula लिखो आपको. See देखो two steel wires having same length and suspended from a ceiling under the same load. मतलब force is same or not? Tell me. Same Yeah. load means force is same length है, दो wire attached है, suspended from a ceiling wire, same length
and force is same. So energy per unit volume I am talking. मतलब U is कितना होगा? Half into stress into strain, right? And the material is same, right? The material is same. The ratio of the diameters. Steel wires दोनों steel है ना? दोनों steel है. So same material है. So right in terms of Young's modulus कितना होगा? Half into ये U1 है, ये U2 है. First pair, second pair. Tell me half into stress square by y. So stress square is force upon unit area square by y, right? By ये ना फॉर्मूला याद है, half into stress square by y, right? Here also half into a1 है मान लो area, because areas are different, right? And इसका force upon area whole square by y. Yeah. Now half of cancel, ff cancel, f square cancel, y cancel, because same material है. So क्या होगा? Oh, yeah, now I got it. You get a2 A2 by A1 whole square is equals a1 to whole square. 1/4. Oh. No, pi d square by 4 you can use. No, so the pi and pi will. Oh, no, my God. No, you don't need to. So if you can, if you find ratio of radius, ratio of diameter is the same. But same only. Okay, so it is diameter. ठीक है, no problem. Diameter में पूछा इसलिए diameter में कर रहा है. So answer is √2:1 is answer. So, but A2 by A1 whole square is equal to 4, right? So देखो A2 by A2 कितना होगा? Pi d square by 4, right? So ठीक है, pi d2 square by 4 by pi d1 square by 4. So d1 by d2 whole square. Oh, yeah, got. d2 by d1 whole square, right? Okay, and this one u1 by u2 value समझ 1/4, right? So कितना होगा? इसमें 1/4 आ रहा है ना? 1/4 आए तो कितना खत्म, right? u1 by u2 is 1/4, right? Yeah. d2 by d1 whole square. तो 1/2 आ रहा है ना? So no, it will be D2 by D1 whole power 4. Okay, sorry. ये pi d square, okay, whole square है ना? So Yeah, whole 4 square. आएगा. Yeah, will be D Yes, by 4. yes. So therefore it is √2:1 is answer. Yeah, you get 1/√2, but that's for D2 by D1. There's D1 Yes. by करो. Numerical based question करो. The elastic potential is stored in a wire. See, formulas we can write in any other form में. Whatever the values are given, उसका format में लिखा तो easy हो जाएगा. Cross sectional area is asking, and the given potential energy is stored in a wire. 20 meters stretch through 2 cylinders. Everything is given to you. Area is still defined. Volume के जगह में area into length you can take. So when you're taking area into length will be 20 meter or 2 centimeters. Length is 20 meters. And delta Okay. L is 2 Then centimeters. delta L is 2 centimeters. Yes. Okay. So do you get decimals? So you want you want millimeter square? No, 1 second. So I got it as 40. Yeah, 40 same. 40, yeah? Yes, 40 is answer. Yes. So मेरा चलो next.
The elastic behavior of the What is material. energy density? Energy per unit volume. Density is nothing but Oh, energy per oh, unit oh. volume. For a linear strain is given this much. Is asking that much. Energy density is asking. Linear strain is given to you. Assume that the material elastic up to the linear strainers. So the given strain also they given. Kitna 5 into 10 power. Strain So is then what's given the point of indirectly. the graph? Huh? What is the point of the graph? The given strain will give. Maybe from that we can calculate the Young's modulus. Maybe the given Young's modulus, no, right? So what is the Young's modulus formula? Again, let me go back. See linear graph का Young's modulus कैसा आएगा? Like the stress Find by slope. strain. So it हाँ. be Young's modulus is Stress by stress by strain, right? 2 longitudinal into strain. 10 power minus 9. Stress by strain. You can take. Stress is 80 and strain is 4 into 10 power of minus. You No, can take anything. मतलब उसका corresponding point ले लो हो जाएगा. 4 so into 10 4 power into 10 minus power 10. minus 10 now. 10. So you get 2 into 10 power minus 9, right? As Young's You get 2 into modulus. 10 power 9. 9 आएगा ना? Yeah. Yeah. 2 into 10 power my y. So if you do 80 divided by 4 into 10 power minus 9. Yeah. you get 2 into 10 power 4. 10 power 9, sorry. No, find करो. Since strain is given, you can use the strain ka formula in terms of strain and Young's modulus में. So Yeah. half into strain square into So y. I'll get 2.5, right? Into 10 power minus 1. Kilojoules per meter cube में चाहिए. Wait. So I have to do, I'm using calculator. Calculate. Where these are JEE mains questions, sir. Answer No. exact. 2 10 power 5. So you get 10 power, so you'll get stresses 10 power 5. That is half into stress These strain, understand right? Once you get modulus, you can substitute, right? Half into. half into strain square into by y. So I can just do half into stress into strain, no? Again force upon area. Area क्या use करो? So Stress now is it's given. stress. The stress we can find, right? By using graph. Young's modulus Anything. into. Any method. Yeah. Yeah. Anything method. Directly Right. strain value दे दिया ना. So क्या हो जाएगा? Half into strain square You get 10 into 10 power 5, that's 10 power 6. by y. 10 power 6 into. You get this. Wait. Strain square into y, right? Into y. So I got this thing as 100. You have to convert it now. So want to get 0.1? Answer, huh? Yeah. No. Half into Young's modulus into strain square. So you're gonna get strain already you formula. know. I mean 500. options, sorry, options. No options. Numerical based है question. Perfect करो. So then what your kg? So use करो. Sir, Strain का value is the given right. 0.01. Huh? 0.01. No. So So half 20. into Young's strain square is how much? 5 into 10 power of minus 4 whole square Yeah. into Young's modulus. Stress by strain how much you got? Young's modulus is 2 into 10 power 9. 2 into 10 power 11 आएगा. 9, no? 2 into 10 power of 11 आ रहा है. Why? Stress by strain, right? So Nothing, 80. Okay. So now substitute करो कितना आएगा? Oh yeah, 2 into 10 power 11. My bad. No. So that's where I went my calculation mistake. So now calculate. I want You get kilojoule. You get 2.5 to 10 power 4 Okay, but I want in kilojoules. divided by 1000. 2.5. No, 0.0025.
तो आंसर आने के बाद also 2.5. 2.5 wrong. No, 25, 25, 25, हाँ 25, 25. 25. अरे डेसिमल में आंसर में लिखे तो अगेन एक साल बैठना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? छोटे छोटे मिस्टेक्स मत करो, एक ही बार होगा. अंडरस्टैंड? नाउ लास्ट टॉपिक इज स्ट्रेस स्ट्रेन करो. आ गया 25 किलो जूल्स पर मीटर क्यूब. Yes, sir. एक कर्वेचर इजी है स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन करो का. दिस अ ग्राफ. सो क्या होगा ये वाला, एक वायर को आई विल स्टार्ट एलोंगेटिंग, टिक 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 बोल के एलोंगेट करता जाऊंगा. अंटिल कब तक एलोंगेट करूंगा? पूरा ब्रेक होने तक आई विल एलोंगेट. सो उसका ग्राफ इफ आई ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ विल बी लाइक दिस. सो इधर से इधर तक स्ट्रेट आएगा, फ्रॉम हियर टू हियर स्ट्रेट, मतलब लीनियर ग्राफ आएगा. एंड उसके बाद ऐसा 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 डी पॉइंट, एंड बाद में ये फ्रैक्चर पॉइंट टूट जाएगा. इज अ ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का. ओके, सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. ओके, नाउ देखिए एक एक का कर्व का देखने वाला है क्या क्या होगा. विल सी ईच एंड एवरी पॉइंट में. ओके, देखो O to A I'm talking about. O to A straight line graph है वाला ऐसा. ओके, linear graph है where it is Hooke's law is region, that is Hooke's law region, we can, that is valid. मतलब क्या हो गया here, stress and strain are direct relation. देखो So can I go back, sir? I can't see the graph is very small. Yeah, one second. एक एक पॉइंट का देखने वाला है. ये क्या होगा? दिस इज परमानेंट स्ट्रेन, परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा. इसको बी पॉइंट को वी कॉल एज यील्ड पॉइंट. बी पॉइंट को वी कॉल एज यील्ड पॉइंट. एंड ए पॉइंट को इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं. So do you have to draw the graph? हाँ, ग्राफ ड्रॉ करने का इम्पोर्टेंट है. तो इसी का टर्म वी आर लर्निंग व्हाट इज. Yeah, so done. Yes, sir, done. Yeah. So I will Draw. just take the thing here. Yeah, draw करो. So what is this plastic region? ये क्या होगा, एक वायर को आई विल स्टार्ट एलोंगेटिंग, एक एंड में फिक्स करूंगा. आई विल स्टार्ट एलोंगेटिंग एलोंग. आई वांट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वायर का. ओके, ऑन द वीडियो आई वांट टू स्टार्ट द स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द दिस वायर का. वो प्रॉपर्टी में आपको ये मटेरियल डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, एवरीथिंग वी कैन नो बाय यूजिंग दिस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. मतलब मैं क्या करूंगा, आई विल अप्लाई सम फोर्स, मैं धक्का दूंगा, फोर्स दूंगा. फोर्स दिया तो there will be stress, right? Force upon unit area. I'll calculate the stress, and there will be strain, right? Change in length by original length. I'll calculate and I'll start at plotting the graph. After taking some points, I'll start plotting the graph until खींचूंगा up until fracture point का ना कर टूट जाने तक we will elongate. Stress strain graph का we are drawing. Okay. So first we are talking about OA region का. OA region, this is a region where stress is proportional to strain. Stress is proportional to strain. When I remove, we'll get modulus of elasticity. E is a modulus of elasticity. The material obeys Hooke's law. मतलब if I तो देखो थोड़ा elongate किया, मैं force apply किया, stress apply किया, strain भी increase हुआ. बाद में when I remove, what will happen? It will come back to the original position. Like you can imagine a spring. Spring को मैं elongate किया up to certain elastic limit तक. If I leave again, it will come back to original position. ऐसे? Okay, समझ में आया? So the material obeys Hooke's law. If the load is removed, the wire comes back to the original length. Okay, and end point A को we call as proportionality limit. Either this is the end point of proportionality limit.
इससे बाद के प्रोपोर्शनलिटी लिमिट काम नहीं होगा. ओनली up to A तक stress is proportional to strain. And if I take the slope of this line, it will give the always Young's modulus of elasticity. In this graph में, when I take slope of this OA line, it gives the Young's modulus of elasticity. जल्दी लिखो. So proportionality limit will be stopped there. Proportional limit or elastic limit. ना? The last line. Yeah. That's I wrote. Now आपको ए बी में देखो, ए बी में इटल में as stress increases strain also will increase, right? Stress and strain is increasing both में A and B, but not direct relation. Direct relation नहीं होगा. Stress is not proportional to strain in A to B always. समझ में आ रहा है? Stress is not मतलब proportionality limit गया काम से, but उसमें क्या होगा? If I leave, what will happen? If I leave, again it come back to original position. मतलब इधर तक elastic limit रहेगा, उसके बाद it will not be there. See, spring को anytime you elongated, spring को certain limit तक elongate किया तो if I leave, it will come back to original position. If you elongated the more than elastic limit, it will never come back. So क्या होगा? At B तक क्या हो रहा है? देखो, beyond A, the relation stress and strain is no longer linear, but the material is still elastic. The material is still elastic up to point B, which is called as elastic limit or yield point. The stress is removed, the material regains its original shape. If a stress is removed, again it come back to the original shape at B tak. Okay. And at B, the stress slightly increases, the strain also increases rapidly. Permanent deformation begins. उधर नो बी के क्रॉस करने से if I leave, it will not come back to original position because इधर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, परमानेंट स्ट्रेन बन गया. एक स्प्रिंग को अप टू बी तक खींचा, इफ आई लीव अगेन कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन. आफ्टर बी इफ आई अप्लाई द स्ट्रेस, व्हाट विल हैपन? इट विल नेवर कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन. मतलब स्प्रिंग को खींचा कभी, यू प्लेड एनी टाइम स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ खेला, पेन का स्प्रिंग के साथ. इफ यू एलोंगेट क्या होगा? अगेन इट विल कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन. मींस नो, सी मतलब बी से क्रॉस करने से नहीं होगा कभी भी. Hence B marks the beginning of plastic behavior. So उधर से थोड़ा plastic behavior will start. Okay, B क्रॉस करने से, B क्रॉस करके थोड़ा भी करेगा ना, वो प्लास्टिक रीजन में चले जाएगा. इट विल नेवर कम बैक टू इलास्टिक रीजन, मतलब इट ओरिजिनल लेंथ में नहीं आएगा. सो हियर क्या होगा? एज स्ट्रेस इंक्रीजेस, स्ट्रेन इंक्रीजेस, बट लीनियर नहीं है, लीनियर ग्राफ नहीं है. मतलब इन दिस में स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है. कौन सा रीजन में? बी टू सी रीजन में, ए टू बी रीजन में, ए टू बी रीजन में, इन ए टू बी रीजन में. अगर बी से क्रॉस कर दिया, सम परमानेंट स्ट्रेस इज हैपनिंग, परमानेंट स्ट्रेस इज हैपनिंग. मतलब अगेन इफ आई लीव, इट इज नॉट कमिंग बैक टू ओरिजिनल पोजीशन. एंड दिस पॉइंट बी पॉइंट को वी कॉल एज इलास्टिक लिमिट. उधर तक इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद वन स्ट्रेन भी थोड़ा ही इंक्रीज किया ना, इट नेवर बैक कम बैक टू ओरिजिनल लेंथ. उसको थोड़ा परमानेंट स्ट्रेस स्ट्रेन बन गया. ओके, हो गया कंप्लीट. Yeah, last. या
Yeah, so done. Okay. Now at B to C a yield region बोलते हैं. Large strain occurs with a little increase in stress. Material starts to deform permanently. Permanent deform हो जाएगा in this B to C region में. And C to D region में क्या होगा? The ultimate stress point came into picture. बहुत stress हो जाएगा. D point में ultimate stress हो जाएगा. Okay. Now D is the maximum stress the material can withstand. उतना उससे ज्यादा खींचेगा तो वो टूट जाएगा, right? And at D to E में fracture point is occurring. Okay, material weakens and finally breaks at E. ये मटेरियल का बारे में वी आर स्टडिंग. मटेरियल क्या है, उसका कौन सा प्रॉपर्टी है बोल के मटेरियल का. सो बेसिक थिंग्स, मतलब फिर से थियरेटिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप लर्न करो इधर एंड डू द क्वेश्चंस एंड फॉर्मुला शीट का अपग्रेड करते जाओ. यू टुक अ प्रिंट आउट, आई सेंड द फॉर्मुला शीट्स. टेक ऑल द प्रिंट आउट्स प्रॉपरली. फिर से 2-3 बार लिखने की जरूरत नहीं है. यू टेक ए प्रिंट आउट्स ऑफ दोस फॉर्मुला शीट्स एंड ट्राई टू ऐड वन पेपर इफ यू वांट. बैक साइड में चाहे तो लिखो एनी न्यू फॉर्मुला कम्स. ओके. 1 second. Yeah. Sir, I'm on the fifth one. Yeah, so done. ओके. नाउ एक ग्राफ से एडवांटेज क्या है? सपोज व्हाट इज डक्टाइल मटेरियल? डक्टाइल मटेरियल मींस It can change its shape. नहीं, A to It B. can, it has the ability to form into drawn wire. into thin wires, right? मतलब सपोज आई वांट द मटेरियल टू बी डक्टाइल. सो व्हेन द मैन्युफैक्चरर के साथ आएगा, पीपल सी यू आर, आई एम मैन्युफैक्चरर, यू आर द कस्टमर, you are coming to the manufacturing, you will tell that I want ductile material. So कैसे पता चलेगा? I prepare something and I given to you. कैसे पता चलेगा ductile है not ductile है? आपको ये ग्राफ चेक करना पड़ेगा. आपको they will do the in front of you, we will do the experiment करके, then आपको ग्राफ ड्रॉ करने से if D and E are far away, then what we can conclude? It is ductile. Okay. If D and point or E and point are very close, that material is called as brittle. That material is brittle. Okay. So लिखो, shows full करो large plastic region है तो then we can say it is ductile. मतलब D and E point are far away, far apart. So why And not C brittle to D? means, हाँ, Why not C to D? C to D क्या रीजन क्या है? आपको मतलब ब्रेक नहीं हो रहे. अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के बाद आल्सो इट शुड नॉट ब्रेक. डी पॉइंट इज द अल्टीमेट, मतलब ब्रेकिंग उतना कैपेसिटी है. उसके बाद आल्सो इट इज नॉट ब्रेकिंग, मतलब डक्टाइल मटेरियल बोल के ज्यादा है बोल. ओके. ये वाला रीजन प्लास्टिक रीजन में चल रहा है अभी तक. इसका वी कैन नॉट डिसाइड, बट इस डी एंड ई से वी कैन टेल वेदर इट इज अ डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल. देखो ब्रिटल में क्या होगा? ब्रिटल में डी एंड ई आर बाजू बाजू में रहेगा. मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस आने के बाद एक ही बार ठप बोल के टूट जाएगा. दैट मींस द मटेरियल व्हिच यू प्रिपेयर्ड इज brittle. Okay. So here D and E are very near. Okay. So we'll see this one. Covered? 1 second. Yeah. So 1 second. बिट्स में यही पूछेगा. उस ग्राफ में क्या क्या थियरेटिकल है ये पूछेगा.
So what is brittle element, like A to B or like what? नहीं, brittle element means क्या है? Tell me. They break as soon as you throw It it. may, as soon as the breaking stage it breaks. मतलब D and E should be very small. The experiment when you're doing, the D and E point is very small. beside वाला very close है. उसके that material को we call as brittle material. No plastic region. मतलब रीजन नहीं रहेगा, मतलब कम वेरी कम रहेगा आपको प्लास्टिक रीजन, मतलब उतना तक एलोंगेट नहीं होगा, टूट जाएगा तो। लाइक आयरन ग्लास, ग्लास कैसे ब्रेक होगा? ये थोड़ा दकन ठप पल के टूट जाएगा, वेरी ब्रिटल है। Mr. Good. Now there are one more, we call this as elastomers बोल के। elastomers, elastomers ऐसा मटेरियल है where stress is proportional to strain square. Those materials को we call as elastomers. मतलब ग्राफ ऐसा है तो we call that as elastomers. ओके, मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का स्क्वायर है। समझ आया? Yeah. यस। सो वी लेफ्ट विथ ओनली वन थिंग, पॉइजन्स रेशियो। लिखो पॉइजन्स रेशियो, लास्ट वन, पॉइजन्स रेशियो। देखो पॉइजन्स रेशियो क्या है? सपोज देयर इज ए वन रॉड इज देयर, उसका डायमीटर इज डी, ओरिजिनल रॉड में एलोंगेट किया, आप अप्लाइंग ए फोर्स एलोंगेटेड, उसके वजह से क्या होगा? द रॉड विल बिकम थिनर। मान लो d माइनस डेल्टा डी होगा, d इज अ डायमीटर, change in diameter, d original minus change in diameter will give this one, okay, and length L and delta L. Then the Poisson's ratio is defined as lateral strain by longitudinal strain. Lateral strain by longitudinal strain. Lateral strain means a side वाला lateral strain, मतलब change in diameter by original diameter. Strain कभी भी change in dimensions by original dimensions, right? So delta d by d, and longitudinal strain is nothing but longitudinal भी, देखो when I elongate, longitudinal भी strain हो रहा है and lateral भी strain हो रहा है, तो दोनों को strain को we divide, will get Poisson's ratio, and delta d by delta L by L, and ये delta d So is what is delta D here? Change in diameter, diameter, right? हाँ, delta Delta d D is is change in change in diameter, diameter. हाँ, change in diameter. माइनस क्यों ला बिकॉज पॉजिटिव आने के लिए, चेंज इन डायमीटर इज नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव माइनस प्लस हो जाएगा, पॉइजन्स रेशियो। Yes, sir. Yeah, so done. क्वेश्चन करो। द इंक्रीज इन लेंथ ऑन स्ट्रेचिंग द वायर इज 0.05%। इंक्रीजिंग द लेंथ इज गिवन, मतलब व्हाट इज गिवन? डेल्टा Delta एल L बाय by L. एल इंटू 100, राइट, मतलब परसेंटेज में, ठीक है, द गिवन एज 0.05. Its Poisson's ratio also given, its diameter is so much. In percentage में I want diameter in percentage, मतलब I want delta d by d into 100 करो। I want to find, options are given in percentage, इसका कितना है? So this is 0.02. 0.02, yes, correct. So can't we calculate directly in percentage? We can get, right, because you can use that ऐसा find delta d by d calculate करके also into 100 किया तो we'll get percentage, right? फॉर्मूला यूज कर सकते ना, डेल्टा d by delta L by L. Yes, sir. So answer how much? 0.02. Yes, 0.02%. So by this, your chapter successfully done in this elasticity wala.